So hello everyone, welcome back to our channel. So today I have a good lesson for you. A lot of people have a confusion about how to use look, see and watch. I have the solution for you. Now after this video you will not be confused about how to use look, see and watch. ओके सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लुक, सी और वॉच का इस्तेमाल एक प्रॉपर तरीके से कैसे उनको डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सी की। SEEC, सी मीन्स नॉर्मल देखना। सी मीन्स नॉर्मल देखना। इट मीन्स आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ नेचुरल थिंग्स जो हम अपनी आंखों से नेचुरली देखते हैं, दैट इज कॉल्ड सी। सी मीन्स टू बिकम अवेयर अबाउट समथिंग। किसी भी चीज को जानने के लिए हम देखते हैं। इट मीन्स टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग एंड इट मे बी दैट नॉर्मल लुक। एक नॉर्मल सी मीन्स जो मैं विदाउट स्ट्रेसिंग देखता हूं, दैट इज कॉल्ड सी। नॉर्मल सी के लिए देखना, जैसे whenever I wake up in the morning, I see around, I see out of my window. Whenever I go outside, I see both the sides and then I move ahead. Clear? So this C means normal C. We have more examples of C. You can see here. The next I have for you, that is called look. Look is used to indicate something. Whenever you use look, it means you are indicating something. Like, look at there. Look at the whiteboard. Look at me. Look at that. Look at this. So look means to indicate someone. You are indicating something. जब आप किसी चीज की तरफ इशारा करते हो, then you use look. Didn't get my point? Let's have some examples of that. Look at that boy. He is dancing. Look at me. How I look. I'm just indicating you by your hands, by your eye. Look at this. So I'm just indicating something, then I use look. Let's have some examples of that. See these examples. Now, I'm going to tell you about watch. वॉच इज यूज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वॉच का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वॉच अ मूवी। वॉचमैन, तो एक स्पेसिफिक चीज के लिए हम यूज करें, एक स्पेसिफिक वॉच पर हम निगरानी के लिए यूज कर रहे हैं। सपोज आई एम वॉचिंग वीडियो मीन्स आई एम वॉचिंग अ वीडियो मीन्स आई एम जस्ट हैविंग अ लुक ऑन अ पर्टिकुलर स्पेस, ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस। एक पर्टिकुलर प्लेस को देखने के लिए हम वॉच का इस्तेमाल करते हैं। लाइक वॉचिंग मूवी, वॉचिंग मोबाइल, तो हम एक पर्टिकुलर स्पेस को देखते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वॉचिंग मोबाइल। वॉचिंग मोबाइल मींस देयर इज अ पर्टिकुलर एरिया, आई एम जस्ट वॉचिंग दिस। वॉच, लाइक वॉचमैन। व्हाट डज अ वॉचमैन डू? वॉचमैन डज अ पर्टिकुलर लुक ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस। एक पर्टिकुलर प्लेस की वो निगरानी करता है, दैट इज कॉल्ड वॉच। तो निगरानी करने के लिए हम यूज करेंगे वॉच। Let's see some examples of that. I watched a movie last night. I am watching a movie. They are planning to watch a movie. So it is used for a particular like movies. Clear? To nigrani something. Watch. Let's see some examples of watch. These are the examples. Look at there. So I hope you like the video. Please keep supporting, keep watching. Thank you very much. Have a nice day. Bye bye. और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी। Have a nice day. Bye bye.